Hello everyone. Today we are going to learn subject English. In that we are going to learn lesson number 4.5, the elephant and the ants, given in our Balbharti textbook, page number 67. This is a very beautiful story of the elephant. Elephant मतलब क्या होता है? हाथी. Ants मतलब चींटियाँ. Read aloud. आपको जोर से पढ़ना है. Once upon a time, there lived a huge elephant in the forest. Every day, it would walk heavily, stomping the ant hills. The ants decided to teach the elephant a lesson. One day, the elephant was eating banana leaves. All the ants started biting it. The elephant was unable to bear the pain. It began to trumpet loudly. The ants felt sorry for the elephant. They said, "We are sorry. We wanted to teach you a lesson." The elephant realized its mistake. It understood that all living beings feel pain. From that day onwards, the elephant did not trouble others. Moral: might does not always make right. Let's understand this lesson more nicely through some pictures. Once upon a time, there lived a huge elephant in the forest. एक बार एक जंगल में एक बहुत बड़ा एलिफेंट रहता था. Every day it would walk heavily, stomping the ant hills. वो क्या करता था? वो जब भी चलता था तो सारे जो एंट हिल्स हैं, जो चींटी के घर हैं, उन्हें कुचलता हुआ, रौंदता हुआ चलता था. The ants decided to teach the elephant a lesson. एंट्स ने क्या डिसाइड किया कि एलिफेंट को सबक सिखाना चाहिए. One day the elephant was eating banana leaves. एक दिन elephant जब banana leaves खा रहा था, all the ants started biting it. तो सारी चींटियों ने क्या किया? वो elephant को bite करने लगे, काटने लगे. The elephant was unable to bear the pain. elephant को वो पेन बिल्कुल bearable नहीं था, मतलब वो सह नहीं सक रहा था. It began to trumpet loudly. Trumpet sound of the elephant. Elephant कौन सा sound करता है? Trumpet. तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा. The ants felt sorry for the elephant. Ants को बुरा लगा. तो ants ने कहा, they said, "We are sorry. We wanted to teach you a lesson." हमें आपको लेसन सिखाना था. The elephant realized its mistake. एलिफेंट को अपनी गलती का रियलाइज हुआ कि मुझसे काफ़ी बार एंट हिल तोड़ने से चींटियों को भी दर्द हुआ होगा. It understood that all living things begins feels the pain. एलिफेंट को क्या रियलाइज हुआ कि हर लिविंग बींग्स को क्या होता है? दर्द होता है. From that day onwards, the elephant did not trouble others. उस दिन के बाद एलिफेंट ने कभी किसी को परेशान नहीं किया. Moral of the story is, might does not always make right. इसका मतलब क्या होता है? हमेशा ताकत ही सही नहीं होती. Let's move on to the notes of the lesson. Page number 68. Number 2. Listen and write.
आपको सुनना है और आपको ये सारे वर्ड्स लिखने हैं। HUGE huge, ELEPHANT elephant, HEAVILY heavily, STOMPING stomping, ANTHILLS ant hills, LESSON listen, BANANA banana, LEAVES leaves, BITING biting, PAIN pain, TRUMPET trumpet, LOUDLY loudly, REALISED realized, MISTAKE mistake, UNDERSTOOD understood, ONWARDS onwards, TROUBLE trouble, STRONGER stronger, GREATER greater. Number 3, complete the following sentences. Number A, the ants decided. ants ने क्या decide किया था हमारे लेसन में? The ant decided to teach the lesson, to teach the elephant a lesson. To teach the elephant a lesson. Now the other sentence, the elephant was unable. Elephant के लिए bearable क्या नहीं था, वो क्या नहीं सह सक रहा था? To bear the pain. जो चींटियों ने उससे काटा तो वो पेन इतना unbearable था elephant के लिए. It understood that all living beings feel pain. उसे क्या रियलाइज हुआ, वो क्या समझ गया कि हर लिविंग बीइंग्स को पेन होता है, दर्द होता है. From that day onwards the elephant what he did not trouble. उसके बाद से उसने क्या किया, वो किसी को भी परेशान नहीं करता था. Others, this is UTROUBLE trouble, the others. Next is fourth one is take the characters from the story. स्टोरी में कौन कौन से कैरेक्टर्स थे? टाइगर था क्या? नहीं. एलिफेंट था? यस. डॉग था? नहीं. बटरफ्लाई? नो. ants were there? Yes, ants were there. After that the next is, now here you are going to write the following words in alphabetical order. अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मतलब क्या होता है? अल्फ़ाबेट मतलब ABCDEF कहाँ तक? Z तक. अब आपको फर्स्ट लेटर देखना है और वो अरेंज कैसे करना है? ABCD के फॉर्म में. उसे क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. नाउ फर्स्ट कम्स लेटर A. तो A से यहाँ पे क्या दिया है? एंट. तो आप क्या लिखेंगे? एंट. ए के बाद क्या आता है? बी. बियर. फिर क्या आता है? लेटर ई. अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में बी के बाद ई आता है तो हम क्या लिखेंगे? एलिफेंट. नाउ द नेक्स्ट वन इज लीव्स बनाना फॉरेस्ट. तो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्या आता है? बी. बी से हमारे सामने कौन सा वर्ड दिया है? बनाना. फिर कौन सा लेटर आता है? एफ.
F से हमारे सामने कौन सा वर्ड है? फॉरेस्ट। उसके बाद लीव्स, Leaves, लीव्स। आपको फर्स्ट लेटर देखना है और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसे अरेंज करना है। नेक्स्ट इज सन, मून, क्लाउड। तो कौन सा लेटर सबसे पहले आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में? सी। सी से क्या वर्ड है? क्लाउड। CDEFGHIJKL M कम्स। तो M से क्या आता है? मून। MNOPQR, देन कम्स लेटर S। तो हमें क्या लिखना है? सन। डिस्कस द चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ द एलिफेंट। एलिफेंट में कौन कौन से चेंजेस आ गए इसके बाद, ये आपको डिस्कस करना है, मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स के साथ ये डिस्कस करना है। नंबर 7 इज रीड एंड डिस्कस अ स्टोरी बुक अबाउट एनिमल्स। आपको रीड करनी है एक कोई भी स्टोरी बुक जिसमें एनिमल्स होंगे और उसके बारे में अपने दोस्तों के साथ, पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना है। लेसन नंबर 4.5 द एलिफेंट एंड द एंट्स, given in our Bal Bharati textbook, page number 67 and 68, 67 to 68. Question number 1, give the meanings of. Number 1, huge, very big. Second, felt sorry, felt sad. Third, might, strength, mistake or wrong action. Realized, understood. Question number 2, give one word for. Number 1, the sound made by an elephant, trumpet. Number 2, putting one's foot down very hard on the ground or on someone else. अपने पैर को ज़ोर से ज़मीन पर मारना या तो किसी चीज़ को कुचल देना, उसे क्या कहते हैं? स्टॉम्पिंग। नंबर 3, मैच द फॉलोइंग। वंस देयर लिव्ड अ ह्यूज एलिफेंट। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए हैं, इस साइड में आपको आंसर्स दिए हैं। Once there lived a huge elephant in the forest. कहाँ? In the forest. So first answer is C1. Second is the ants felt sorry. Ants को किस बात का बुरा लग रहा था? Sorry, for the elephant. Number 3 is might does not always. What is the moral of the story? Might does not always make right. Question number 4, arrange the following words in alphabetical order. Number 1, bear, elephant, ant. We have already solved this in our textbook. So answer will be ant, bear, elephant. Second one is leaves, banana, forest. Answer banana, forest, leaves. Number 3 one, hill, ant, listen. Answer ant, hill, listen. Question number 5th, complete the following sentences. The ants decided to dash. Ants ने क्या decide किया था? Teach the elephant a lesson. Number 2, elephant was unable to bear the pain. Number C, it understood that all living beings dash feel pain. Question number 6, give the opposites of. Now opposite बताना है आपको, उसका उल्टा। यूज मतलब सबसे बड़ा, वेरी बिग, उसका क्या है आंसर? यूज का ऑपोजिट वर्ड इज टाइनी, हैवी, लाइट।
loudly, quietly. Pain, comfort. Question number 7. Make word train from the given word. Now your first word is elephant. Now you are going to form a word train. You will take the last letter and you will make a new word. Elephant. T. T से कौन सा word आता है? Time, train, tortoise, tiger, any word you can write. फिर आपको उसका last word लेना है. यहाँ पे E. Eagle. Again E. Egg. Now next is ant. T. Tiger. R. Rat. T. Talk. Thank you.